नमस्कार दर्शक बंधु पुणी एक नूतन वीडियो रे आपण मानकु समस्त को स्वागत। आज आम दशम श्रेणी इंग्लिश रो ए ग्रेन आज बिग आज ए हेन्स एग ए पाठर किछि एमसीक्यू क्वेश्चंस आलोचना करिबा। वीडियो आरंभ करबा पूर्व समस्त को अनुरोध जे जो माने हमर चैनल को नुआ आसीछन्ते एवं सब्सक्राइब करि नहंती से माने जल्दी जल्दी हम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को माध्यम प्रेस करि नियंतु जहाँ द्वारा आम जिते भी जहाँ भी वीडियो अपलोड करूँ तार नोटिफिकेशन आपण मान पाखे सर्वप्रथम पहुँची। तो चलतु आ डेरी करबा नहीं आम देखा ए ग्रेन आज बिग आज ए हेन्स एग विषय किसी एमसीक्यू क्वेश्चंस आलोचना करबा। ठीक अच्छे देखो फर्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए स्टेटमेंट ऑफ द ग्रैंडफादर आर आंसर हम बाइंग और सेलिंग ऑफ ब्रेड वाज नॉट ए सिन। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न रही ए ग्रेन आज बिग आज ए हेन्स एग इज ए नाइस स्टोरी बाय डैश एटा हम लियो टॉल्स्टॉय। ठीक अच्छे पिला माने परवर्ती प्रश्न रही हु ऑफ द फॉलोइंग डिसाइडेड द स्ट्रेंज थिंग आज ए ग्रेन ऑफ कॉर्न आर आंसर हम वाइज मैन। परवर्ती प्रश्न रही द ट्रावेलर बॉट द ग्रेन आज बिग आज ए हेन्स एग फ्रॉम द चिल्ड्रेन फॉर ए डैश एटा हम पेनी। प्रश्न अच्छी बट टुडे आई फील श्योर दैट गॉड हिमसेल्फ स्पीक्स थ्रू द पंच हु सेड दिस एटा हो जुमन। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न रही पिला माने इन माय टाइम मनी वाज नॉट येट इन यूज हु सेड दिस एटा हम द ओल्ड पीजेंट्स फादर। परवर्ती प्रश्न द स्टोरी दैट डिस्क्राइब्स लव बिटवीन मैन एंड एनिमल इज डैश एटा हम ए टाइगर इन द हाउस। प्रश्न अच्छी द ग्रैंडफादर सेड दैट डैश वाज द ओनली थिंग men called their own एटा हो लेबर। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज टूथलेस बेंट एंड पाल आर आंसर हम द ओल्ड पीजेंट। परवर्ती प्रश्न रही बाइंग और सेलिंग ऑफ ब्रेड वाज ए डैश ड्यूरिंग ग्रैंडफादर्स टाइम आंसर हम सिन। द किंग बॉट द ग्रेन आज बिग आज ए हेन्स एग फ्रॉम ए डैश एटा हम ट्रैवलर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु केम टू द किंग्स कोर्ट विदाउट एनी क्रच आर आंसर हम द ओल्ड मैन्स ग्रैंडफादर। परवर्ती प्रश्न the person who came to the king's court with the help of 2 crutches was dash एटा हो the old man। प्रश्न रही in grandfather's time dash was free आर आंसर हम land। नेक्स्ट क्वेश्चन my field was God's earth who said this my field was God's earth who said this आर आंसर हम the old man's grandfather। Next question the wise man could know that the thing as big as a hen's egg was a grain of corn when dash and answer of a hen picked at it and made a hole in it। ठीक अच्छे a hen picked at it and made a hole in it। परवर्ती प्रश्न देखा देखो प्रश्न अच्छी in order to inform the king about the place and time of growing of such corn the wise men dash it was searched in their books। Next question what did the first old man do to answer the king's questions our answer was he took the grain and felt it with his hands। परवर्ती प्रश्न रही the old man's father said that the dash एटा हम ऑप्शन सी हम सठिक उत्तर shared with one another। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न it is the very same kind was said by dash एटा हो the grandfather of the first old man। Next question some children found a thing shaped like a grain of corn but as large as a hen's egg dash एटा हम in a long deep narrow valley। ठीक अच्छे in a long deep narrow valley। परवर्ती प्रश्न रही द ट्रावेलर सोल्ड द वंडरफुल थिंग टू द किंग आज ए क्यूरियोसिटी तले अंडरलाइन करा जायछि द अंडरलाइंड वर्ड मीन्स डैश क्यूरियोसिटी रो मीनिंग कोन पचरा जायछि आर आंसर हबो स्ट्रेंज इंटरेस्टिंग
रेयर ऑब्जेक्ट ठीक अच्छे स्ट्रेंज इंटरेस्टिंग रेयर ऑब्जेक्ट परवर्ती प्रश्न द वाइज मैन केम टू नो दैट द स्ट्रेंज थिंग वाज डैश यार आंसर हम व्हेन ए हेन picked at it and made a hole in it when a hen picked at it and made a hole in it हम सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न द वाइज मैन सेड टू द किंग द यू विल हैव टू आस्क द पिजेंट्स तले अंडरलाइन करा जायछि द अंडरलाइंड वर्ड मीन्स डैश यार मीनिंग कोन एटा हम कोन ना ऑल द अबव हम सठिक उत्तर कहीं उपरोक्त तीनोटी जाकर उत्तर ठीक अछि परवर्ती प्रश्न रही द किंग वांटेड टू नो अबाउट डैश एटा मध्य हम ऑल द अबव कारण ए बी सी तीन टा ऑप्शन ठीक अछि परवर्ती प्रश्न को जिबा क्वेश्चन अछि द फास्ट इन्फॉर्मिटीज ऑफ ओल्ड एज वेयर डैश एटा हेजबो ऑल द अबव उपरोक्त तीनोटी जाक ऑप्शन ठीक अछि परवर्ती प्रश्न रही द किंग आस्क्ड द फर्स्ट ओल्ड पीजेंट वेदर ही कुड टेल हिम डैश एटा मध्य हम ऑल द अबव कारण उपरोक्त तीनोटी जाक आंसर सठिक रही परवर्ती प्रश्न द फर्स्ट ओल्ड पीजेंट्स फादर वाज हेल्दियर देन हिम इन दैट डैश एटा मध्य ऑल द अबव परवर्ती प्रश्न रही द स्पेशलिटीज ऑफ द सेकेंड ओल्ड पीजेंट्स टाइम वेयर दैट डैश आर आंसर हम ऑल द अबव तीनोटी जाक ऑप्शन ए बी सी तीनोटी जाक सठिक रही ठीक अच्छे प्रश्न अच्छी हाउ हेल एंड हार्टी वाज द ग्रैंडफादर आंसर हम ऑल द अबव उपरोक्त तीनोटी जाक ऑप्शन रो आंसर ठीक अच्छी परवर्ती प्रश्न रही द फर्स्ट ओल्ड पीजेंट सेड दैट इन हिज टाइम द ग्रेन्स वेयर डैश आर आंसर हम ऑफ द वेरी सेम काइंड नेक्स्ट क्वेश्चन द एसेंशियल गुडनेस ऑफ द ग्रैंडफादर्स टाइम वाज दैट डैश आर आंसर हम ऑल द अबव ए बी सी तीनोटी जाक ऑप्शन रो आंसर ठीक रही एटा हम ऑल द अबव हम ऑप्शन डी सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न रही पिला माने इन द ग्रैंडफादर्स टाइम लैंड डैश एटा हम डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल हम सठिक उत्तर प्रश्न रही अकॉर्डिंग टू द ग्रैंडफादर द सीक्रेट ऑफ फिजिकल वेल-बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ हिज टाइम वाज दैट डैश आर आंसर हम दे लिव्ड अकॉर्डिंग टू गॉड्स लॉ एंड डिड नॉट कवेट अदर पीपल्स पोजेशंस ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा प्रश्न अच्छे अकॉर्डिंग टू द ग्रैंडफादर द अर्थ स्टॉप्ड बियरिंग लार्ज ग्रेन्स बिकॉज डैश आर आंसर हम ऑल द अबव उपरोक्त तीनोटी जाक ऑप्शन आंसर सठिक थिबारु एटा हम कोन ऑप्शन डी हम सठिक उत्तर ऑल द अबव परवर्ती प्रश्न द किंग्स लास्ट क्वेश्चन टू द ग्रैंडफादर वाज डैश राजांकर शेष प्रश्न कोन थिला ग्रैंडफादर को आंसर हम व्हाट द सीक्रेट ऑफ हिज बीइंग सो हेल एंड हार्टी वाज ठीक अछि परवर्ती प्रश्न रही व्हाट वाज द स्पेशल फीचर ऑफ द ग्रैंडफादर्स टाइम आर आंसर हम पीपल वेयर सेल्फ सफिशिएंट एंड बेनिवोलेंट ठीक अच्छे बेनिवोलेंट पीपल वेयर सेल्फ सफिशिएंट एंड बेनिवोलेंट परवर्ती प्रश्न दे coveted not what others had produced the underlined word means dash coveted तले underline करा जायछि आर मीनिंग कोन पचारछि आंसर हबो desire greatly something which belongs to another ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि wherever I plowed there was my field the underlined word is used as dash wherever तले अंडरलाइन करा जायछि आर एटा कहा कोन भाबरे गोटे यूज करा जायछि एटा हबो कंजंक्शन ठीक अछि गोटे कंजंक्शन भाबरे यूज करा जायछि परवर्ती प्रश्न each man had corn enough of his own
हियर द अंडरलाइंड वर्ड इज यूज्ड एज डैश एन ऑफ तले जो अंडरलाइन करा जायछि सेटा कौन भाव यूज करा जायछि आर आंसर हम डिटरमिनर ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने डैश वाज पार्शियली साइटेड एंड रादर डीप आर आंसर हम द ओल्ड पीजेंट्स फादर। परवर्ती प्रश्न अच्छी men have taken to depending on the labor of others taken to तले अंडरलाइन करा जायछि द अंडरलाइन फ्राजाइल वर्ब मीन्स डैश ए फ्राजाइल वर्ब रो मीनिंग कोन आंसर हबो बिगिन डूइंग समथिंग एज ए रेगुलर हैबिट ठीक अछि बिगिन डूइंग समथिंग एज ए रेगुलर हैबिट। परवर्ती प्रश्न हाउ हैव दिस थिंग्स कम अबाउट द अंडरलाइन फ्राजाइल वर्ब मीन्स डैश ये कम अबाउट तले अंडरलाइन करा जायछि से फ्राजाइल वर्ब रो मीनिंग कोन आंसर हबो हैपन ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न को जिबा परवर्ती प्रश्न अछि द थिंग दैट द चिल्ड्रन फाउंड वाज एज लार्ज एज ए डैश एग रहबो हेन्स एग ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछ पिला माने हु बॉट द ग्रेन फ्रॉम द चिल्ड्रन आर आंसर हबो ए ट्रैवलर। परवर्ती प्रश्न द लर्नेड मैन asked the king to consult the dash for information about the corn answer habo peasants। परवर्ती प्रश्न the first old peasant who was brought to the king worked with the help of dash crutches answer habo 2 crutches। The ours was larger and yield more flour than present day grain but I never saw any like this who said this line ए लाइन टी को के कहिसंती और आंसर हबो द ओल्ड मैन्स फादर ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि इट वाज कॉर्न लाइक दैट वी यूज्ड टू सो एंड रीप एंड थ्रैश हु सेड दिस लाइन ए लाइन टू के कहिसंती और आंसर हबो द ओल्ड मैन्स ग्रैंडफादर। Buying and selling of bread was considered a sin during the time of the dash about the old man's grandfather। परवर्ती प्रश्न अछि land was free it was a thing no man called his own who said this line ए कथाटी के कहिसंती और आंसर हबो द ओल्ड मैन्स ग्रैंडफादर। प्रश्न अछि in the line men have ceased to live by their own labor What does the underlined word mean? Underline कराइबा word टिर अर्थ कोन आंसर हबो stopped। Next question they had what was their own and coveted not what others had produced they had what was their own and coveted not what others had produced who said this line a line to के कहिसंती और आंसर हबो द ओल्ड मैन्स ग्रैंडफादर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड द किंग आस्क टू द ग्रैंडफादर एट द एंड शेषरे केतोटी प्रश्न पचारिसंती आंसर हबो 2 क्वेश्चंस ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि ड्यूरिंग द ग्रैंडफादर्स टाइम डैश वाज नेवर possessed by any person During the grandfather's time, dash was never possessed by any person. Answer हबो land ठीक अछि। तो पिला माने एठी हमरो ए विषय रो समस्त MCQ क्वेश्चंस रो आलोचना हमर सरी जायछि। आज रो वीडियो को हम एठी रखिबा वीडियो टी किपर लागिला आपण माने निश्चित भाबरे आपण मानकर मूल्यवान मतामत कमेंट बॉक्स रे लिखि जणाइबे। आज पय एतिकी पुणी देखाबो आ एक नूतन वीडियो रे सेत पर्यंत विदाय दियंतु रहउछि धन्यवाद जय जगन्नाथ।